Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Habitat. It is our pleasure and privilege to have this opportunity this evening to be able to welcome and congratulate Geetanjali Shree on her amazing book and her very prestigious award. It is particularly important for us as well because it reinforces our commitment to ILF Samanvay. ILF Samanvay, which is the Habitat's Indian Languages Festival, was begun in 2010 as possibly the only literature festival that focused solely on writings in Indian languages. One of the underlying themes in all our editions has been the importance of translations, because it is very important to have translations for the spread of literature, so you can understand how important this evening is for us. Thank you Teamwork for partnering with us on this and giving us this opportunity. On behalf of ILF Samanvay, I welcome you again, Geetanjali Shree, and congratulate you. Welcome Poonam Saxena, who's going to be in conversation, and all of you to this evening. Thank you. Good evening, thank you so much, William, and thank you to the ISC for co-hosting this wonderful occasion. When we were in London, I suggested to Geetanjali that perhaps we could look at a celebration in India, because this particular award does need a celebration for so many different reasons, the least being perhaps the fact that the International Booker Award was given to her and to Daisy Rockwell. So on behalf of all my colleagues at Teamwork Arts, Namita Gokhale and William Dalrymple, who is somewhere in London, a warm welcome to all of you. I think this is one of the first times I've come back to the Stein Auditorium. I don't think Vidyun invites us anymore. But I've come back here post-COVID and glad to see all of you here. The reason why we said wear your masks, primarily because numbers are climbing. This is a closed space, so we leave that decision to you, but we would love you to be safe and sound. We had Geetanjali Shree join us in London just after the announcement of the International Booker Prize, and it was absolutely wonderful to have her in sessions there, and this really in many ways is to celebrate that. Namita, myself and our colleagues have always really looked at the importance of translation. The Jaipur bookmark, which happens on the side of the Jaipur Literature Festival, focuses on that. We've got our advisors, Urvashi Putalia, the former co-director Neeta here. Translations is important. Why? Because it allows you to go beyond language. It allows you to explore different worlds, different philosophies, customs and traditions. And most importantly, it allows you the access that sometimes we are not afforded if we don't know more than one or two languages, as is the custom in India. So this really is a celebration, and the last few days in London, we raised the toast to Geetanjali, and I'd like you all to join me in once again congratulating Geetanjali Iyer for this, Geetanjali Shree for this wonderful occasion, and of course thanking Poonam for being in conversation with her. And to tell you a little bit about the session, please welcome Namita Gokhale. Thank you, friends, for being here. Thank you, Sanjoy, for not calling me Namita Bhandari. I wouldn't have minded. But then Sanjoy and Teamworks are doing so many things at so many times that it is indeed confusing and puzzling and joyous to be in the midst of their many celebrations. And I'm so delighted that after having had Geetanjali Shree with us at the Jaipur Literature Festival twice and recently at the JLF in London, after having had Poonam Saxena with us at the Jaipur Literature Festival and her co-author Karan it's infectious, Karan with us in London once, whether it is high art or popular culture, we meet here across languages
across so many things. It's absolute pleasure and a privilege to be with all of you. This much anticipated conversation between Geetanjali Shree. Her surname, I'm told, she has taken the surname from her mother's name, and I think that is a very deep and thoughtful thing. So the International Booker Prize winner for 2022, my friend Geetanjali Shree, and the distinguished writer, journalist, and translator Poonam Saxena, who has written and translated some really wonderful books, and whose next book I'm looking forward to with really deep anticipation. I don't want to talk about it, but it's going to be an important book for Indian literature. We at the Jaipur Literature Festival believe in the strength, the beauty, and the diversity of the Indian languages. We also deeply value literary translation as a means of arriving at a platform for world literature, as a point of exit from the continuing hegemony of the English language. The irony of my speaking in English is not lost to me, but so be it. It is a very effective British language. And the Jaipur Bookmark over the years has worked on many, many translation efforts, which you may well be aware of. We are honored to present what promises to be this significant session. Geetanjali Shree's novel Great Samadhi, translated into English as Tomb of Sand, was the first book in any Indian language to win the International Booker Award. She is the author of 5 novels and several short story collections. Announcing the award, Frank Wynne, Irish translator and jury chair, said, and I quote, "We were captivated by the power, the poignancy, and the playfulness of Tomb of Sand, Geetanjali Shree's polyphonic novel of identity and belonging." In her acceptance speech, Geetanjali Shree observed, and again, I saw this on video and was deeply moved, "This award is not just about me, the individual. I represent a language and culture, and this recognition brings into larger purview the entire world of Hindi literature in particular and Indian literature as a whole." Poonam Saxena, who will be in conversation with Geetanjali Shree, is herself rigorously bilingual and has written several highly regarded translations and a co-authored book. I am curious to see what the disconnects between English and Hindi are crossed over in today's important conversation. This is the first time I've seen a book being as much talked about in the language in which it is written, such as in Hindi, and in the translation simultaneously. And there's really I've had 2 conversations with Geetanjali Shree, one at the British Council here and one in London, and I'm extremely eager to hear what they talk about today. So may I please invite Geetanjali Shree and Poonam Saxena up to the stage. Wherever you are, Geetanjali Shree ji, and the elusive authors. The winner of the 2022 International Booker Prize is Tomb of Sand by Geetanjali Shree. Translated by Daisy Rockwell. Published by Tented Access Press. I was told this is London and I should be prepared for everything. It might rain, it might snow, there might be clouds, there might be the sun, there might be the Booker. Come prepared. So I did, but I think I'm not prepared still. I'm completely overwhelmed. But I do have a few words I wrote, just in case. So I'm going to read that out. This is a bolt from the blue, but what a nice one. And I'm still reading.
I never dreamt of the Booker and never thought I could. What a huge recognition. I'm amazed, delighted, honored, and humbled. थैंक यू नमिता संजय गीतांजलि बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ में बात करते हुए बात करेंगे I would like you actually before we begin the real conversation to read an extract from Ved Samadhi लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल you're someone who likes to work quietly brings out beautiful books at regular intervals and suddenly you have had to cope with this incredible amount of attention and publicity. मतलब विश्व भर के पत्रकार आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फोटो, सेल्फी वगैरह वगैरह. How are you coping with all this attention? I hope you're enjoying it. I am enjoying it, but I'm not. I think I'm not the best person for it. I'm not very well made for all this attention. Yeah, I've been a very private person, that's right. And suddenly to be so much in the public gaze is a huge adjustment for me. उसमें तीन चार चीज़ें हैं, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ उतनी अच्छी नहीं लगती हैं. बहुत सी चीज़ें जो मैं अपने एकांत से जानती थी, देखती थी, वो अब अचानक बीच दुनिया में लुढ़क आई हूँ या फेंकी गई हूँ. वहाँ पे उन चीज़ों को देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ. जैसे this complete obsession with hype and celebrity culture. Now I'm right in the midst of it, and I keep saying it again and again. I'm not a celebrity, and will never be a celebrity. But there is this thing which just turns on every day. And when the market is the other thing. Suddenly the good business, the market is much closer at hand than ever before. Politics in different circles. So there are all kinds of new things that I'm seeing, or even old things that I'm seeing from a different vantage point. And I think it's making me wiser. It's a teaching, learning experience for me. जो आप कह रही हैं कि कैसा लगता है इतने ज़्यादा लोग आपकी तरफ अचानक इतने ज़्यादा लोग आपको तवज्जो देने लगे. तो देखिए अटेंशन तो सभी को अच्छा लगता है, तो वो तो मैं एंजॉय करती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव अगर होने लगता है तो फिक्र होने लगती है इसका क्या किया जाए. मुझे लगता है कि सीख रही हूँ उसको भी हैंडल करना. तो पहले बहुत पोलाइट थी, अब थोड़ा पोलाइटली रूड भी हो जाती हूँ, और उम्मीद कर रही हूँ कि रूडली रूड नहीं होना पड़ेगा. पर ठीक है, और मैं कहती हूँ कि ये साहित्य की बात है जो बहुत गंभीर चीज़ है, तो ये सेटल भी कर जाएगा. ये फिल्म स्टार वाली बात नहीं है और क्रिकेटर वाली बात नहीं है कि हमेशा लोग मेरे पीछे पड़े हैं. तो ये शांत हो जाएगा और मैं अपने शांत घेरे को फिर से पा जाऊँगी. अच्छा लगेगा, दोनों तरह से अच्छा लगेगा. थोड़ा सा एक बात और है कि देखिए ये तो हुआ ही है कि मेरी my circle of friends and well-wishers has increased incredibly in these very few days. Old friends have resurfaced, new friends have emerged, and all that obviously feels good. I have met some very, very nice people in this time. So it's a very rich experience. I'm still processing it. But you can never go back actually, to just your quiet life of writing books and nothing else. Your new book, when it comes out, will also be much, anticipated and expected. Well, that is fine. One will have to just find the balance. Life has changed, but I think one has to find the balance and find that space back again to some extent. It's important. अब आप अपना मनपसंद टुकड़ा पढ़ लीजिए, please.
आई थिंक हम यही पढ़ सकते हैं, ये आपको ओके। मनपसंद तो नहीं जानती, लेकिन मुझे लगा कि उतना शायद भारी नहीं है, थोड़ा इसमें मजाक का पुट भी है और कुछ इस उपन्यास के बारे में कहता है, तो मैं वो टुकड़ा पढ़ूंगी। The book is set in a North Indian family, but family, is a microcosm of everything that happens in the world. So it's not just about family. So this is a little section which is about the quibbling that goes on in families. कहना चाहिए परिवार को, जबकि कहते हैं महाभारत को, कि जो दुनिया में वो उसमें और जो उसमें नहीं वो कहीं नहीं, कवि के तसव्वुर में भी नहीं, यानी भूला भटका आतंकवादी, गर्मा भरमा वामपंथी, नारीवाद और नारी, हरवादी और जीती हारी, सब परिवार में या महाभारत में, जिसे जैसे रुचे पचे। महाभारत में दुनिया, दुनिया परिवार में, और इसलिए परिवार में महाभारत, जो रोज रोज के हंगाम, हर एक महाभारत। इसलिए परिवार के हर सदस्य को पता है कि जो मुझ में वो किसी में नहीं, और जो मुझ में नहीं वो होने लायक नहीं। और ये कि मेरे पास दिमाग है, औरों के पास पैसा, और ये कि मेरा फायदा उठाया सबने, अब हम नहीं बाकी करें, और ये कि हम दूर रह के भी रहम दिल, तुम वही हो पर कितने बेरुखे, और ये कि हमेशा हम ही देते हैं और आप हमेशा लेते हैं, और वाह आपकी सूझ, जिसमें आप तो मिलनसार, हम वही तो मतलबी यार, आप चुप तो विनयशील, हम चुप तो तानिया, आप करें तो शिष्टाचार, वही हम करें तो लल्लो चप्पो, आप कहें तो साफ गोई, हम कहें वही तो बदतमीज, हम पूछ लें तो अश्लील जिज्ञासा, आप पूछें तो हमदर्दी, हम करें तो हमारी सुविधा, आप करें तो आपकी कृपा, हम करें तो कंजूस, आप करें तो किफायती, हम चुप तो घमंडी, आप चुप तो शर्मीले, हम तो बड़े सीक्रेटिव पर आप तो बस रिजर्व्ड, और हमारे फैशनेबल कपड़े नकल, आपके जमाने से कदम ताल, और हमारा गया तो ऐसा क्या बवाल, आपका गया तो लुट गए हाय हाय, और हमने किया तो क्या किया, और आपका इरादा वो भी किया, यानी हम वो जो हमने किया, आप वो जो आपने सोचा, और हमने कहा तो कटाक्ष, आपने कहा तो मजाक, और हमने अपनी बताई तो मियाँ मिट्टू, आपने बताई तो सहज सत्य, और हमने पा लिया तो हथियाया, आपने पाया तो आपका अधिकार, और हमने कहा तो हमारा गुमान, आपने कहा तो आप तो हैं ही सही, और हम गुस्साए तो ह्यूमर की कमी, आप गुस्साए तो आत्मसम्मान, और हम कर गए तो कर्तव्य था, आपने किया तो बड़प्पन हुआ, और हम सफल तो आपका सहारा जो मिला, और आप असफल तो हमने अड़ंगे जो डाले, और जी हम रह गए तो हम काहिल, आप रह गए तो आप त्यागी, और जी हम न समझे तो पैदल, आप नहीं तो भोले, और जी आपको हमसे वैर तो हम इसी लायक, हमको आपसे वही तो हम ईर्ष्यालु, और जी हमने किया तो स्वार्थ, आपने वही तो परमार्थ, और अगर हम न करें तो बेपरवाह, मगर आप न करें तो मजबूरी, और हमने जितना किया सो कम, आपने जरा भी सो ज्यादा, और हमारी नाक टेढ़ी तो बदसूरत, आपकी आंख टेढ़ी तो कलात्मक, और जी अपनी तस्वीर अच्छी तो फोटोग्राफर माहिर, आपकी अच्छी तो आप सुंदर, और जी हम गोरे तो छिली बटेर, आप सफेद तो आप तो विलायती लगे, हम काले तो बैंगन भट्ट, जबकि आप काले तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल, हम मोटे तो खाऊ पेटू, आप मोटे तो रौनक चमक,
हम दुबले तो सूखी लकड़ी, आप सीख तो सौम में सजिल, और हम चलाएं एसी तो अय्याश, आप चलाएं तो सेहत नाजुक। हम पिए तो शराबी, आपने पी तो डॉक्टर की हिदायत। हमारी जबान अंग्रेजी तो शो ऑफ हम, आपकी तो शिक्षित आप। अच्छा, आपकी जरूरत तो हम एक परिवार, हमारी जरूरत तो आप अलग और अकेले। हम शरीफ तो मुलम्मा, आप वही तो खानदानी। हम अपनी मेहनत की खाएं तो फूहड़ पंसारी, आप जोंक सा लग जाएं पर संस्कारी। और जी, आपका काम काम और हमारा काम तमाम। यस जी, नो जी, हम जी, तुम जी, और हम और तुम और तुम और हम और अम्मा, और इतना हमने किया और तुम साथ हो के न देखते। और बेचारी बुढ़ा गई और पड़ी रही और अकेली और जानती भी नहीं क्या कर रही है, और नाम भी गलत सलत दे रही है, और दिमाग पर है असर, और सब के सब दौड़ पड़े। बहुत अच्छे। गीतांजलि, ये सुन के मुझे आपसे पूछना है, एंड दिस इज समथिंग यू हैव स्पोकन अबाउट आल्सो, कि आपकी किताब में भाषा का बहुत अद्भुत प्रयोग है. You use language in an extremely interesting, different, rhythmic, musical way almost. So, what is there anything you want to tell us about why you use language in this really extraordinary way? I think आपने इसको ध्वनि का रूप बताया था. Poonam, I'm not very sure I'm comfortable with the word prayog, because I don't think I'm experimenting with language for the sake of experimenting. I think over these years of writing, and also I think my hobnobbing with theatre, I've done some work with some theatre groups, and one day some of them are here. But I think what I've learned in the course of these years is that language is an entity by itself. It's not just something which can be used, which has to be used as a vehicle to say something. वो शब्दों की एक अपनी महिमा होती है, वो अपने में एक उनका व्यक्तित्व है, and it is almost in deference to language, not almost, I mean, it is in deference to language that I move with it. And it's the power of language that really takes over and makes me write in certain ways. So it's really not, trying to do, strange things. I think language has that power. And I think language has that place in literature which people often forget. They use it just as something to to tell a story, but it's not just a vehicle. It is something in itself. और वहाँ पे ध्वनि का बहुत बड़ा मतलब होता है. ध्वनि मेरे लिए बहुत मायने रखती है. यहाँ पे मेरा जो थिएटर का तजुर्बा रहा है वो काफ़ी मेरे ख्याल में ध्यान देने योग्य है. उसमें मैंने ये सीखा कि कहाँ पे रोकने से, कहाँ पे कुछ सीधे जाते जाते कुछ टेढ़ा कर देने से कोई और तरह बात जो है उसमें असर आ जाता है. तो ये चीज़ें सुनते देखते सीखते मेरी भाषा में आते चले गए. कुछ ऐसा बात. But I found amazing when I was reading the book that the style is consistent from page 1 till the last page. मतलब उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है. It's the wordplay is there throughout. It's quite remarkable. मुझे लगता है कि शब्दों में ये फ्लूइडिटी होती ही है, तो हम उन्हें फिक्स कर देते हैं और मान लेते हैं कि इस शब्द का यही मतलब है. असल में तो शब्द मतलबों को खोलते हैं और शब्दों में तरह तरह की ध्वनियाँ होती हैं. तो मुझे लगता है कि मैं जब लिखती हूँ तो वो चीज़ें कुछ मुझे छेड़ती रहती हैं और मैं उनके संग बढ़ती रहती हूँ. Do you think this makes your book a challenging read and not an easy read for a reader?
मैं ये इस तरह का सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है, that you are a difficult reader, writer, and that it's difficult to read you. मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और अशोक जी सामने बैठे हैं तो उन्हीं का डायलॉग मैं बोल देती हूँ। ये कहते हैं साहित्य कोई समोसा नहीं है कि मुंह में डाला और गप कर दिया। तो इसमें मुश्किल क्या है? अगर आपको थोड़ा सा कहीं ठहरना पड़ता है, कहीं पे चौंकना पड़ता है, या थोड़ा दोबारा उसके पास लौटना पड़ता है, कुछ फिर से कोशिश करनी पड़ती है, या नहीं समझना भी कोई इतनी बड़ी मुसीबत की बात नहीं है। बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, वो हम पे कुछ प्रभाव छोड़ती हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और हम उसको हम शब्दों में बांध के कह नहीं सकते हैं कि इसका ये मतलब है, लेकिन हमें मालूम है कि ये कुछ है। ये तरह तरह की बातें होती हैं जो हमको अपने जो आप डिफिकल्ट बोल रही हैं उसके दायरे में लेकर उसका आनंद लेना चाहिए। जैसे किसी ने मुझसे, मेरी एक और मित्र ने ही कहा था, वो तो नहीं बोलते यहाँ पर, वो दिल्ली में नहीं है इस समय, वो कहती थी कि लिटरेचर इज नॉट फॉर क्लैरिफाइंग, इट इज फॉर कंफाउंडिंग। और मुझे लगता है कि हमको इसका भी मजा लेना आना चाहिए, टू बी कंफाउंडेड। आई थिंक लिटरेचर invites you to think anew, to get shaken a little bit, to sort of let a new space open inside you where you are reflecting on things in a slightly different way, feeling things in a different way. और उसमें आप फिर से चीज़ों को खंगाल रहे हैं और समझ रहे हैं और ना समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और छोटे मुंह बड़ी बात लगेगी, मैं अपने को नहीं उनसे कंपेयर कर रही हूँ, लेकिन साहित्य की बात कर रही हूँ। शेक्सपियर क्या बड़े आसान हैं? शेक्सपियर को लोग पढ़ते भी हैं, डिकोड भी करते रहते हैं, नहीं भी समझते रहते हैं, और शेक्सपियर इतने महान हैं। जस्ट वन एग्जाम्पल। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि ये आजकल वी लिव इन एन एज ऑफ being everything is dumbed down so much, it has to be given to us in little bite-sized morsels. आपने समोसे की बात की, वैसे ही है कि ये लोग जल्दी से खा के निकल लो। तो जिस चीज़ में मेहनत होती है, जो लेखक समोसे बना रहे हैं वो समोसे खाने। I couldn't agree with you more. Geetanjali, your main character is an 80-year-old woman. And जब हम उनसे मिलते हैं किताब की शुरुआत में, उपन्यास की शुरुआत में, तो वो एक कोने में बिस्तर में लेटी हैं and she is facing the wall. तो ये जो image है, we have all seen this image in our lives, in our homes, in our friends' homes, of an elderly person just lying in bed, seemingly disinterested. लेकिन आपकी जो माँ कैरेक्टर है, she is not disinterested. She has just turned her back on life and she's looking for something. I really want you to tell us a little bit about this very extraordinary character, because हमें इतने अद्भुत बुजुर्ग पात्र इतिहास साहित्य में नहीं मिलते हैं ज़्यादा। देखिए, आपने कहा कि ये छवि बहुत ही एक साधारण और बहुत ही आम छवि है कि एक बुजुर्ग औरत पीट करके बेजार, जिंदगी से बेजार, बेकारी के एहसास से घिरी पड़ी हुई है, मानो बस अपने अंत के इंतजार में। तो सही बात है कि ये छवि हम लोग बहुत जानते हैं और सबको पता है, सब ने अपने घरों में देखे हैं। मगर मैं समझती हूँ कि दूसरी वाली छवि भी इतनी अनकॉमन नहीं है। जो जिजीविषा एक बुजुर्ग में भी है, ये उपन्यास उसको सेलिब्रेट करता है। हमारे चारों वो किरदार भी हैं जो जिनके लिए उम्र कोई बंधन नहीं है और अभी भी वो जिंदगी को भरपूर एंजॉय करते हैं। और बोलते बोलते मुझे कृष्णा सोक्ति याद आ रही है। कृष्णा जी तो बिल्कुल almost to the end, she had that spring in her step when she was ready to go to the other end of the world. And she's not one single woman like that. I think they're surrounded by women like that. So I think this book is really celebrating that side of life and women and age. So to that
उसको लिख रही थी तो मेरे संग ये छवि बिल्कुल जिस तरह से आपने उसको पेश किया कि कोई स्त्री जो अब लगता है उसको जीने से ऊब चुकी है, उस तरह की स्त्री बैठी हुई थी। पर वो इतनी देर तक मेरे साथ वो छवि मेरे साथ साथ थी और चल रही थी कि कहीं ना कहीं वो कुछ मुझको छेड़ने लगी और मेरे भीतर ये जिज्ञासा पैदा होने लगी कि क्या ये वाकई इतनी बेजार है या कुछ और हो रहा है, क्या ये वाकई बस चुप पड़ी है मरने के लिए तैयार या कोई और खिचड़ी पका रही है। तो मैं कुछ नई दिलचस्पी से और जिज्ञासा से उसको देखने लगी और इंतजार करने लगी और उस दीवार की तरफ वो अपना कर रही थी। तो ये भी मेरे मन में आने लगा कि ये बस अपने को उसमें चुनवा देना चाहती है ख़त्म होने के लिए या उसकी सांस वहाँ पे रेडी की तरह एक छेद करती चल रही है और छेनी की तरह हाँ छेद करती चल रही है और ये उस तरफ निकल जाना चाहती है एक नई जिंदगी में। और वाकई वो किरदार एक दिन नहीं नहीं कहते कहते नई नई कहने लगी और उठी और फिर तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता तो मैं भी उसके साथ उछलती कूदती बढ़ती चली। So maybe we do a disservice sometimes to the elderly people that we know in our families and among our friends where we think that dharmik pustake padho and that's how you should spend your days, but maybe that's not what they want. Sure. I think we have enough evidence all around us how much life is to be enjoyed and the right to be lived. I mean, there's irony in this because there is that lust for life, but the body is obviously becoming frailer. So there is irony in that, and I think this book again brings out that irony in that, you know, with some humor that, you know, she gets interested again in her body. But for a woman who's touching 80, you know, what is her body going to be? It's not the body of a young girl, you know, an adolescent girl, and her discovering her, you know, budding female beauty. This is an 80-year-old body full of, you know, sort of hanging flesh and warts and moles and wrinkles. So, but the excitement and the involvement is like of an adolescent girl. So there's something very playful and endearing about it, and something sad as well. I think that the novel, you know, brings out. But I love the way she decides now I'm going to abandon my saris because I have to tuck in half the sari. It's too uncomfortable. So I'm just going to wear these long dresses or gowns or maxis or whatever you want to call them. And that was and free herself, exactly. The novel is set in a family, and Ma has a son, she has a daughter, she has a daughter-in-law. And in the novel, you have not given them names. उनको आपने बड़ी, बहू, बेटी, किस तरह से आपने उनके बारे में लिखा है? माँ का भी नाम हमें बहुत बाद में पता चलता है. Was there any particular reason why you did this? A lot of things when I write get decided by the dynamic of the narrative. पर आप पूछ रही हैं तो मेरे मन में मैं सोच रही हूँ इसके बारे में, मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है। तो मुझे लगता है कि देखिए हम लोग इंडिविजुअल भी होते हैं पर हम एक टाइप भी होते हैं, and we are sort of representing unique me, but I'm also representing something much more widespread and universal. So I think this is really probably a way of spanning both. So if you give them names, then it becomes much more the story of Kishore and Rashmi or whoever. But if you say Bade and Beti, then they represent more than just themselves. They represent, you know, a larger reality. So I think it was that sort of looking at them which made me say Bade, Beti, Ma, Amma. But just as, you know, none of us are made up of any single neat story or one single neat identity. At
different times, I think a different identity will come to the surface. When she crosses the border, then the story she's in the midst of is the story of this woman called Chanda, who is later, when she's crossed this artificial border that has been made and has gone into what is India, is called Chandraprabha. I think that's what we do. So Chanda and Chandraprabha suddenly have an importance, and they, it's their story suddenly. So it comes out. But in the initial part, it's a story of Ma, it's a story of Amma, it's a story of Dadi. So there was no need to give her a name. So I think it is really to span the individual and the type they represent, or individual and the universal that they represent. Am I making sense? I think so. So because of this, the novel has also been called a novel about a family. It's also been called a partition novel, though Ma actually crosses the border only, I think, 260 plus pages into the book. Is it both? Is it more? See, I think maybe readers, critics feel the need to fix the theme of a novel or a creative work much more than the writer does. So I'm really not desperately keen to find out what exactly the main theme of my novel is. But as it happens, a certain mood has evolved, and certain sort of things have happened in the course of the unraveling of the novel, which where one of the uniting themes has become partition, but not partition merely with that capital P, not just the partition of India-Pakistan, which you say comes after, I don't know, 267. almost towards the last quarter of the book. But so I don't think it's only about that partition. I think the novel becomes a novel about many, many partitions that we just forge in our lives, of age, of gender, of the human beings and other living creatures, human beings and the environment. And I think when it starts discussing these, or when these stories about these different partitions keep sort of coming in, some of these partitions are actually just very, they're reflected in very ordinary daily occurrences, but many have reverberations which go into so-called bigger stories. But that also the novel discovers as it goes along, that somehow the mundane and the epic are related. So sometimes it's a very mundane incident, but the shadow that it is throwing out is epic. And I think that the novel keeps discovering, and it keeps discovering that partitions create borders, but not. There is the possibility of not accepting the borders as a wall which has to divide. It can be turned into a bridge which connects the two. So the novel finds its own voice and stories as it goes along, and certainly becomes a novel about partitions, borders, bridges, if you will. That's lovely. Geetanjali, getting the Booker was a great moment for you personally, but it was also a great moment for Hindi and I think for Indian languages as well. Don't you think that's true? Absolutely. Being naked, so the net fell on me. That was okay. That was great. But it will be very unfortunate if it is seen as, it cannot be seen as something which is about me alone. Nobody is operating in a vacuum. So if there is, अगर मेरी कृति
कहीं उगी है तो वो एक उपजाऊ ज़मीन में ही उगी है, तो उस ज़मीन पे और भी कृतियाँ हैं, तो नज़र उधर जानी ही जानी चाहिए। और जो इस बुकर के माध्यम से हुआ है वो ये है कि आपको उन भाषाओं की तरफ नज़र गई है जो सो कॉल्ड लार्जर वर्ल्ड के परव्यू से अभी खासे बाहर रही है। तो उसमें हिंदी के लिए ज़रूर एक ये बड़ा पल है, लेकिन साउथ एशियन लैंग्वेजेस, नॉन इंग्लिश साउथ एशियन लैंग्वेजेस जिनके बारे में बहुत कम मालूम है, उनकी तरफ नज़र इसने सबकी की है। और हमारा बहुत मतलब हमारी बहुत बेवकूफ़ी होगी और संकीर्ण दृष्टि होगी अगर हम इस बात को ना समझें और इस पल को जाने दें। और मुझे याद आ रहा है जब भी गैब्रियल गार्सिया मार्केज को नोबेल प्राइज़ मिला, उसके पहले साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन राइटिंग को कोई ख़ास ऐसे नहीं जानता था। गार्सिया मार्केज को नोबेल प्राइज़ मिला और उसके बाद बहुत उस तरफ लोगों की नज़र गई और लैटिन अमेरिकन, साउथ अमेरिकन साहित्य को लोगों ने डिस्कवर किया और इतनी उसके बाद बात होती रही। और हुआ ऐसा कि एक मार्केज नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो मार्केज भरे पड़े हैं और बल्कि मार्केज से बेहतर भी हैं। वो जिस तरह से भी आप तराजू लेके तौलिए वो अलग बात है, लेकिन ये कि ये एक है नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ है। तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए कि ये पल उसके बारे में, अगर ये उपलब्धि हमारी हो तभी इस पल का सच्चा जो भी अर्क है और मज़ा है वो हमें मिलेगा। I think the moment has to be seized by publishers and writers also. Publishers, translators, readers, everybody. So I actually wanted to ask you a question about translation, but I think we have a few minutes to take some audience questions if there are. Otherwise, I'll ask you what I wanted to. Are there any questions from the audience? Yes, lady there. We'll send the mic. Just hold on for a second. Poonam, you could take a few questions in clusters and then. Yeah, okay. Is it working? So Geetanjali, you said that you also credit Kamla Sokti in your book. You dedicate the book Krishna Sokti. Krishna Sokti. I'm so sorry. And she is regarded as a pioneer in Hindi literature. So I wanted to know what kind of influence she had on your work, how she inspired you, and maybe what was your eureka moment while writing this book? What inspired you to basically sit down and write this book, and how did she influence your writing? Any other question? If Sanjoy is suggesting we take a bunch. Hello, ma'am. It's a fan moment actually. I have read your My Lodhi, and from there to the Samadhi. Congratulations for the book. It's not question, एक observation है कि जो आपका partition का narrative है, it's very humane. और आज जो current scenario में partition को जैसे दिखाया जा रहा है, I think we'd rather take questions, if you don't mind. Yeah. Not Is to there any forget. other question? Not to forget it. Sorry, we'd rather take questions. Yeah, let me finish and then come to the question. Please, if you are. Sir, you didn't have a question, you just had an observation. No, I'm just going to make a question. That's what I'm going to ask her. If she is trying, has she tried to challenge the idea of partition that is being purportedly, given to people? Let's not forget what happened during the partition. While she is trying to make a very human story out of partition,
Or as he said, these are the borders, partitions, not just one border or one partition. Thank you, sir. I don't think I can take too many questions together because I'll just lose train completely. पर आपने जो मैं इनका पहले ले रही हूँ, आपने जो खुद ही कहा it's a human story that's been made और borders की बात है, bridges की बात है, तो ये तो है ही challenge to the whole thing of partition. यही है challenge उसमें. तो challenge कह के ही नहीं किया जाता है. पार्टीशन को दूसरी तरह से दिखाकर ही आप चैलेंज करते हैं और ये सही बात है कि पार्टीशन के नाम पे और पार्टीशन का जो फॉल आउट है जो आज भी बहुत और तरीकों से भी बहुत भद्दा है और बहुत ही भयानक रूप ले रहा है, लेकिन जो नहीं मानते हैं उन चीज़ों को और उसको उसमें जो दूसरी चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाते हैं और उनको ज़्यादा जगह देते हैं, तो वो वही उस तरह से उसको चैलेंज करते हैं, उसी तरह से उसको चैलेंज करते हैं. और आपका सवाल कृष्णा जी को लेकर, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि कृष्णा जी की पूरी एक शख्सियत थी और उनकी जो पूरी entire body of her work and her way of she's one of those few writers who as a person and as a writer were absolutely stupendous. नहीं तो थोड़ा अलग रहता है, तो आप अक्सर जो पर्सन है उसको शायद जानते नहीं है, कभी कोई बहुत चुप रहता है या किसी और तरह का दिखता है और लेखन से ही आप उसको जानते हैं. कृष्णा जी दोनों ही तरह से बहुत ही ज़बरदस्त थी. जो मुझे उनकी शायद सबसे ज़्यादा चीज़ एक तो उनकी सच्चाई, ईमानदारी और बिल्कुल ही निडर होना और जिस आज़ादी से और दबंगई से वो लिखती थी, इसको आप उपन्यास कहते हैं कि नहीं, इसको आप पॉलिटिकली करेक्ट ये बात होती है कि नहीं, वो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ती. उनको उस समय अगर उससे जूझना, तो उनकी जो ये जो स्पिरिट थी, that is what inspired me a lot, and I hope if I can invite you to a bit of that, I will pack myself back. Question to you, and I have one small question. I am Santosh Mehta. I would like to know how long it will take you to write a book, and how difficult it is to reach to this level, you know. I can tell you how long it took me to write this book. It took me 7 or 8 years, which is long, and 7 or 8 years I often was deeply immersed in my own world. But about level, I don't know which level this is. Booker level has nothing to do with me. If there's no other question, I have. There is a question, ma'am. While you were writing the book and after the book was published, were you overcome by thoughts as to what kind of reception the book will get in India and outside India? And the other thing that I want to know, do you have an agent to enable the book to get wider publicity in UK? मैं हिंदी में पूछूं आपसे? Did you have an agent to enable the book to get wider publicity in UK? No. And what kind of thoughts did you have while you were writing the book and after the book was published regarding the kind of reception which the book will get? None at all. Okay. गीतांजलि जी, आपने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा स्टारडम या शोहरत की आपको आदत नहीं है और आप कोई फिल्म स्टार या क्रिकेटर्स भी नहीं है कि ये जो शोहरत आपको वक्त ही मिल रहा है वो आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. हालांकि हम लोग चाहेंगे कि इंशाअल्लाह आपको नोबेल प्राइज़ भी मिले. लेकिन मेरा सवाल दूसरा है. उर्दू में एक बहुत मशहूर ड्रामा है अनारकली. उसको लिखने वाला 21 साल का एक नौजवान था, इम्तियाज़ अली. उसके बारे में कहा था कि 21 साल के नौजवान इम्तियाज़ अली ने जो अनारकली लिख दिया, वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज जैसा बड़ा राइटर बन के भी दोबारा वो नहीं लिख सका. मेरा सवाल है कि वो स्टारडम और ये सब तो बाकी बात है,
लेकिन खुद इतना बड़ा अवार्ड हासिल करने के बाद आपके जो अगला काम होगा या आने वाले दिनों में जो काम होगा, खुद आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि जाहिर आपने इतना बड़ा अवार्ड जीत लिया है। बाहरी दुनिया क्या करेगी पता नहीं, लेकिन एक राइटर की हैसियत से वो एक प्रेशर तो जरूर रहेगा आप पर, और उससे आप खुद को कैसे बचाएंगे? क्यों रहेगा मेरे पर वो प्रेशर, क्यों रहेगा? मैंने ये सुनने में बुरा लग सकता है, पर मैंने पाठकों की कल चिंता नहीं की थी, आज भी चिंता नहीं करती। मेरे लिखने के बाद पाठक आते हैं और मुझे कभी कभी सुखद आश्चर्य होता है इस किताब को लेकर। अगर कोई पाठक ना आता तो मैं सोचती हूँ हाँ ठीक है, काफ़ी ये पागल सी किताब है, नहीं पसंद आ रही किसी को, लेकिन इतने लोगों ने पसंद किया तो जाहिर है बहुत खुशी हुई। मुझे पाठक मेरे काम करने के बाद मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, अपने आप से ये उम्मीद मैं रखती हूँ कि इसमें बदलाव नहीं आएगा। और बुकर के बारे में मैं बार बार ये बात कह चुकी हूँ कि अभी तो सच मानिए तो बुकर पता नहीं आप लोग कहते हैं वहाँ है, आप यकीन मानिए मैं यहाँ हूँ। तो अभी कोई दोनों में कोई खास मेल मिलाप हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि बुकर अच्छी चीज़ हुई है, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन वो थोड़ा मेरे से अलग ही चलेगा। I'm sorry, I don't think we have time for any more questions. You can try and catch Geetanjali later, after the book signing. Thank you so much, Geetanjali. Thank you very much for all of this. Thank you. Thank you, Geetanjali, thank you, Poonam. Geetanjali will be signing books from here on the stage for a short while. So we request all of you to please queue up and we'll help the process along. Thank you so much to all of you who come here. And yeah, just help us in queuing up and let's do it in an orderly fashion. Neha, would you like to thank them in the Jaipur Literature Festival style? क्या भरत जी क्या हाल है? अरे बढ़िया बोला, बहुत अच्छी बात She's been waiting for a long time, man. Excuse me, ma'am. ये बच्चे कब से वेट कर रहे हैं? निश्चय। और एक दिन जल्दी ही गिरफ्तार होंगे तो सॉरी पहले तो बयान लिखना चाहिए। मेरे ऑफिस में रोज मुझे बोलते हैं कि सर लोग आपके लिए बयान जारी करेंगे, मैं बोलता हूँ रुक चालाकी से लिखता हूँ, मैं तो रिक्स पर नहीं जाऊँगा। चालाकी से लिखने की